Good morning, dear students. सुपिंदा this side. प्रोजेक्ट वर्क बच्चों के लिए इंग्लिश में बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है और बाकी सब्जेक्ट्स में भी टाइम टू टाइम देयर आर मेनी गाइडलाइंस फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन असेसमेंट इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स दैट इज ALS. तो 12th और 11th क्लास के लिए दोनों के लिए 20 मार्क्स हैं. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप शेयर कर रही हूँ सारी इंफॉर्मेशन. दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम CBSE साइट. So classes 11th and 12th English core. Code is 301. Total marks are 20. Term 1 में हमने जिस तरह से assessment किया है, that was student friendly because of COVID-19 threat. We were not in contact with the children. But now that offline classes have started, partially 50% children were coming to school, so things became easier for us. Now we can be connected to you in every way. We can look into your work. But still, when the work was coming, there were some queries of the students, and I feel that many of you may be having problem in making this project, which is a new concept. CBSE is trying to make you competent enough to face the world at large. तो प्यारे बच्चों, ये आपको समझना है कि आपको अपने आप को तैयार करना है फ्यूचर के लिए, और उसके लिए CBSE के जो भी आजकल आपके एक्टिविटीज में चेंजेस हुए हैं, दैट इज टू मेक यू प्रिपेयर्ड, टू मेक यू रेडी फॉर एग्जाम्स. आफ्टर दिस वीडियो, your all the queries will be satisfied, that I assure you. So not to waste a lot of time, because time is very precious. Term 1, 10 marks were allotted, and assessment of listening and speaking skills was done. Now, ALS must be seen as an integrated component of all 4 language skills. 4 language skills आप सबको पता है: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग. तो आपका जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है, इसी को टेस्ट करने के लिए आपका ये प्रोजेक्ट वर्क और प्रोजेक्ट फाइल और वाइवा, तीनों चीजें आपकी इसीलिए हैं. एक तो हम आपको ठीक से असेस कर पाएंगे कि वास्तव में आपने क्या सीखा है. आर यू एबल टू कन्वर्स well in language? Can you speak well with accuracy? We keep telling you every now and then, try to speak out, try to speak as and when you get time. Listen to good English channels, especially Doordarshan news channel. I have always recommended कि अगर आप दूरदर्शन न्यूज चैनल में जो इंग्लिश चैनल है उसको अगर आप देखते हो, तो आपकी बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी. बिकॉज we hardly get 40 minutes to talk to each other in our regular classes. टीचर्स के साथ ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि बच्चों को वो 40 मिनट्स में कितना हम आपसे बात करेंगे और कितना आप हमसे बात कर पाएंगे, एंड हाउ मच वी विल बी एबल टू चेक यू. सो वी कीप गाइडिंग यू how to improve your standard of spoken English. So suggested activities take into consideration and integration of the 4 language skills. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 लैंग्वेज स्किल्स जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम असेसमेंट के वक्त चेक करते हैं. एम्फेसिस विल बी गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग. Okay, since reading and writing are already being assessed in the written examination, जो भी आप लिखते हैं, जो पढ़ के लिखते हैं और comprehend करते हैं unseen passages को, that is checked in your written test. But listening and speaking cannot be tested that way. So different way of testing you. Now listening skill का जो main motto है, that is to assess your listening skills for improving learners' competency to listen for basic, interpersonal, instructional and academic purposes. ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स लगते होंगे आपको, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है. क्वेश्चंस जो आपको पुटअप किए जाते हैं, उसको आपको उस सुने हुए पोर्शन के सुनने के बाद
आपको उसमें आंसर लिखने हैं। तो लिसनिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, और सुनने के बाद जब आपका दोबारा 2 बार आपकी वीडियो प्ले होती है, तो उसमें आपको फिर से सुनने का मौका मिलता है और आप उसमें आंसर लिख सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शनल, एकेडमिक पर्पसेस, सारे रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, जो आप लर्निंग करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। अ नंबर ऑफ सब स्किल्स need to be developed in everyday classroom transactions. Given below are some of the sub skills of listening which need to be assessed for the internal assessment component of listening. Now, what are the components of listening? Listening for specific information. कोई क्वेश्चन में आपको कोई चीज पूछी गई है, उसके लिए जो आपको आंसर लिखना है, उसके लिए आपको सुनना है ध्यान से। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको वहां से सुनने के बाद मिल सकती है। लिसनिंग फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग, then when you're listening to a conversation or a speech or a debate, you are trying to understand the overall theme. ठीक है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप सुनते हो, एक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है मन में कि यस, दिस टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड, और दीज टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इस विषय पे ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये आपको, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा। प्रिडिक्टिव लिसनिंग, आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं आफ्टर लिसनिंग टू, जैसे कोई वेदर फोरकास्ट का दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग कि बहुत सारे क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, बहुत तेज हवाएं चल रही है, तो आप प्रिडिक्ट करते हो कि यस, इट इज लाइकली टू रेन नाउ। इन्फरेंशियल लिसनिंग है, लिसनिंग फॉर प्लेजर है, इंटेंसिव लिसनिंग है। चिल्ड्रन, माय पर्पस राइट नाउ इज टू मेक यू अवेयर ऑफ द प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स which we have planned for you. Okay, तो ये तो आपके ALS हो गए, assessment of listening and speaking. Hence the assessment items being prepared by subject teachers must assess the above. तो जो हम आपको लिसनिंग के लिए जो आपके वीडियोस या आपको जो भी हम आपको फाइल्स सुनाते हैं, ऑडियो, वो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रख के बनाना होता है कि आपके सारे लिसनिंग स्किल्स आपके चेक हो, ठीक है। अब स्पीकिंग स्किल्स पे आ जाइए। अभी तक तो आपने लिसनिंग स्किल्स के लिए समझा कि ये सारी चीजें आपकी हम लोग लिसनिंग स्किल में चेक करते हैं। Now what about speaking skills? Assessment of speaking skills must be made an important component of the overall assessment, using this assessment as learning. Okay. Now, dear children, one thing you must remember, language learning, as I keep telling you always, it is just not knowing the story, the gist of the chapter, not that. You need to learn to speak well with accuracy. ये नहीं कि हमने कुछ भी बोला, कुछ भी हो गया, अब हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, करेक्ट इंग्लिश हम नहीं बोल पा रहे। तो जब स्पोकन कॉन्सेप्ट चेक होता है आपका, वी सी दैट वेदर यू आर एबल टू स्पीक करेक्टली और नॉट। फिर बच्चे कहते हैं कि हमें नंबर नहीं मिले स्पोकन में। क्यों मिलते हैं नंबर? जब आप करेक्ट एक्यूरेसी से, फ्लुएंसी से बोल पाते हो करेक्ट इंग्लिश। ओके, देन फॉर स्पीकिंग स्किल, what are the activities? Subject teachers must refer to books prescribed by the syllabus, in the syllabus. Then, in addition to above, teachers may plan their own activities and create their own material for assessing the listening and speaking skills. तो ये टाइम टू टाइम हम लोग आपको क्लास में, क्लासरूम सिचुएशंस में कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलते हैं। वी एनकरेज यू टू स्पीक वेल, we encourage you to come out and talk something on a particular given topic. Extempore है, CCA में भी बहुत सारे आपके एक्टिविटीज ऐसे होते हैं, you get a chance to speak somewhere. Okay, but only thing is that if you are discouraged, if you don't come forward, I don't think anything can help you. Okay, so one thing you must remember, as and when you get an opportunity for speaking somewhere in English, you must try to speak. Okay, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आप मौका हाथ से अगर आप छोड़ते रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हो लाइफ में,
ठीक है? Dear children, remember that you have to prepare yourself for future, your own future. And if you are not good at spoken English, you won't be able to survive easily. थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, है ना? और बहुत सारे आप लोग वीडियोस देखते हैं जिसमें बोलते हैं 3-4 दिन में आप सीख लेंगे इंग्लिश बोलना. No, not possible. This is the time, actually the time starts from class 8th, 9th onwards, where you have to develop your spoken skills, where you have to learn accuracy of language with the help of grammar. तो आपको अपने खुद के कॉन्सेप्ट डेवलप करने का समय बहुत समय से पहले शुरू हो चुका था, लेकिन आपने उस समय को गवा दिया. स्टिल देयर इज टाइम. अभी भी वक्त है कि अगर आप संभल गए, अगर आप अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे, तो यू विल बी यूटिलाइजिंग इट फॉर डेवलपिंग योर स्पोकन एज वेल एज रिटन स्किल्स. राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करना है, लिसनिंग स्किल तो आपको डेवलप करना ही है. यू हैव टू लर्न टू बी गुड लिसनर्स and speaking skills. Okay. Now, following parameters means these are the parameters of assessment for spoken. Interactive competence, initiation and turn taking, relevance to the topic, then fluency, pronunciation, language, accuracy and vocabulary, all these things are points. These are the rubrics given for your understanding, what you have to do. Interaction mein what you are supposed to do. Contributions are mainly unrelated to those of other speakers. Shows hardly any initiative in the development of conversation, very limited interaction. These are the points where we will be testing you. Okay? If you are speaking with someone, we want to see आपका interaction level किस हद तक है. फिर second, आपको जो 2 marks मिलते हैं, वो contributions are often unrelated to those of the other speaker. Generally passive in the development of conversation. Means आप conversation में active role नहीं कर रहे हैं. आपने देखा होगा GDS, आपका जो ये डिफेंस सर्विसेज के लिए जो आपका SSB होता है, उसमें GD होता है, ग्रुप डिस्कशन. अब ग्रुप डिस्कशन में क्या देखा जाता है? Whether you are able to speak and open up with your own views, whether you are able to present your views. तो वहां आप जब लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है, तो यू विथड्रॉ, और वहीं आपके मार्क्स लूज हो जाते हैं. सी 5 मार्क्स किसको मिलते हैं? कैन इनिशिएट एंड लॉजिकली डेवलप सिंपल कन्वर्सेशन ऑन फेमिलियर टॉपिक्स, कैन टेक टर्न्स एप्रोप्रिएटली. ये सारे रूब्रिक्स हैं जिसपे आपको टेस्ट किया जाएगा. 2 नंबर आपको कब मिलेंगे, 3 आपको कब मिलेंगे, 4 कब मिलेंगे, 5 कब मिलेंगे, ये सब. नाउ प्रोनाउंसिएशन. Insufficient accuracy in pronunciation, many grammatical errors, you get only 1 mark. 1 mark को जस्टिफाई करने के लिए जो भी आपके एग्जामिनर्स हैं, they will justify. Yes, you could not speak well. You were committing a lot of grammar mistakes. Communication is severely affected. As I told you, if you say pain, I want pain. Pain means, you know, something which is hurting me. Then I want a pen. Pen for writing. तो मैं पेन मांग रही हूँ, लेकिन I'm saying I want pain. So the whole scenario changes. Then major communication problems हैं, largely correct pronunciation and clear articulation, except occasional errors. Some expressions cause stress without compromising with understanding of spoken discourse. Now, who will get 5? Can pronounce correctly and articulate clearly, is always comprehensible, uses appropriate intonation. सारे pronunciation के जो तरीके हैं या जो भी requirements है, they are done by the student. That child gets 5 in pronunciation. ये सारे rubrics आपके use होते हैं when we are assessing you for ALS. Okay, assessment of listening and speaking. तो स्पीकिंग में एक चीज तो हमने ये समझी कि प्रोनाउंसिएशन, इंट्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर. वी शुड नॉट बी पैसिव लिसनर्स. हम चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं और बोल नहीं रहे कुछ, तो इंट्रैक्शन के पॉइंट्स हमारे कम हो जाएंगे. प्रोनाउंसिएशन में इफ वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स प्रॉपरली, करेक्टली, with correct grammar, this thing, then also you lose your marks. Now, fluency and coherence. Noticeably long pauses, rate of speech is slow,
frequent repetition and or self-correction, links only basic sentences, breakdown of coherence evident. Okay. Now 5 किसको मिल रहे हैं? Speaks fluently, almost with no repetition and minimal hesitation, develops topic fully and coherently. Okay. तो ये आपके fluency के points हैं, where you get good marks. Vocabulary and grammar. Now 1 mark वाले बच्चे जो है उनको demonstrates almost no flexibility and mostly struggles for appropriate words. एक वर्ड करके रुक रहा है, वर्ड ढूंढने में उसको टाइम लग रहा है, यूजेस वेरी बेसिक वोकैबुलरी टू एक्सप्रेस व्यू पॉइंट्स, कुछ सॉलिड वर्ड्स नहीं यूज कर पा रहा बोलते वक्त, या उसको उसके पास वोकैबुलरी की कमी है. दैट ऑल्सो वी कम टू नो व्हेन द चाइल्ड स्पीक्स. Similarly for grammar also. Now can express with some flexibility and appropriacy on a variety of topics such as family, hobbies, work, travel, and current events. Frequently uses complex forms and sentence structures, has enough vocabulary to express himself or herself. Dear students and viewers, whosoever is watching this video, I just strongly stress upon this point that if you want to really improve your spoken English, you have to connect with all these things, your fluency, your pronunciation, interaction, whenever you're talking to someone, how actively you are participating in a debate or any discussion. That is very, very important. Vocabulary and grammar तो है ही important आपका. ठीक है, अब ये शेड्यूल कब होना था आपका ALS? That should be the practice of listening and speaking skills should be done throughout the academic year. And dear children, we are doing it. As in when you're listening to your teacher speaking in English, और आपके संगी साथी जब रीडिंग करते हैं या ड्रिलिंग चलती है क्लास में, किसी बात पे डिस्कशन चलता है, you all are listening for specific reasons, for specific purpose and informations. Okay. The final term 1 assessment of the skills is to be done as per the convenience and schedule of the school. Dear students, the present trend of assessing you people on the basis of your performance in ALS is well known to all of you कि बिना इसके हमारा कोई गुजारा नहीं है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, otherwise our marks will reduce. CBSE has been very kind enough to divide the whole course into 2 terms. इससे आपको थोड़ा फायदा हुआ है, लेकिन उस फायदे का तभी आपको असर पड़ेगा अगर आप अपना टर्म 1 का प्रॉपर आपने प्रोजेक्ट्स और सब कुछ किया है, और ऐसे ही टर्म 2 का आपने ढंग से प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं. टर्म 1 is over, term 2 also will be over. Next year again you will be having some or the other kind of change. But believe me, language learning में कोई change नहीं आएगा, कोई आपका compromise नहीं होगा, और आपको कुछ भी नहीं उसमें आपको changes होंगे. ना तो आपकी spoken English change होगी, ना आपके projects change होंगे, ना आपका viva change होगा. किसी दूसरे फॉर्म में आ सकता है, हो सकता है कुछ चेंज आ जाए, बिकॉज कोविड-19 के बाद से बहुत सारे चेंजेस सीबीएसई करती जा रही है आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए. कोर्सेज हैव बीन रिड्यूस्ड फॉर योर कन्वीनियंस, बट उसको हम और इजीली ले रहे हैं तो वो हमारा एक गलत बात हो जाती है. दैट्स व्हाई वी मे सफर एंड देन वी मे रिग्रेट, which I don't want my students to regret at any point of time in life. Okay, at this point of time I wish you all the best. जीने आपका जो जीवन है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको फॉलो करना है हार्ड वर्क. ओके, नाउ सेकंड टर्म, कमिंग टू सेकंड टर्म, वी हैव अगेन 10 मार्क्स. अब आपका चेंज क्या हो गया है? पहले आपके लिस्टिंग और स्पोकन स्पीकिंग स्किल्स आपके टेस्ट हो रहे थे, अब आपका प्रोजेक्ट वर्क एंड वाइवा. नाउ दीज आर द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ यू. ये एरिया है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है. प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा तो आप उसी टाइम सुनेंगे और जवाब देंगे, एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू हैव टू लर्न द बेसिक्स. टेंसेस आपके कंफर्टेबली आपको आने चाहिए, समझना चाहिए कैसे आप उसको यूज करेंगे, हाउ यू विल बी यूजिंग इट इन योर डेली डे टू डे रूटीन लाइफ. एज आई टोल्ड यू, पीपल कीप सेइंग 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में आप इंग्लिश बोलना सीख लेंगे. Again, I am telling you, it is not possible. It is a
practice which goes a long way. From your class 6th, 7th onwards, you try to change your attitude. तो उसमें आप अगर अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे कि हमें हार्ड वर्क करना है, वी हैव टू यूज द लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली, एवरी डे वी मस्ट डू समथिंग, या तो हम इंग्लिश सुने या हम लिखें या बोले, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि टर्म 2, उसमें आपके 10 मार्क्स में प्रोजेक्ट वर्क के कितने मार्क्स हैं और आपके वाइवा के कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 मार्क्स अलॉटेड फॉर द टर्म 2, 5 marks will be allotted for the project, report, script, essay, etc. and 5 for the viva. तो 5 तो आपके वाइवा के हो गए और 5 आपके प्रोजेक्ट फाइल के हो गए, जो बहुत जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो उसके नंबर आपके नहीं होंगे। जब आप वाइवा अटेंड करोगे तो प्रोजेक्ट की फाइल आपके हाथ में होगी एंड द एग्जामिनर हु विल कम फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपके लिए, तो वो आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू शो योर फाइल प्लस यू हैव टू आंसर दैट। देन द प्रोजेक्ट विल बी वन स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क टू बी कवर्ड इन द टर्म 2। बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट, बहुत लंबी चौड़ी फाइल नहीं है आपके लिए। आपका एक सेट टारगेट है, छोटा सा प्रोजेक्ट फाइल है आपका, जिसमें आपकी मेन चीजें जो है वो आपको कवर करनी है। However, the planning for the project by students in consultation with the teachers can begin early. इस साल कोविड-19 की वजह से जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, हम मिल नहीं पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा चल रही थी, तो उससे फर्क तो पड़ा है, लेकिन हम उस फर्क को अब दूर कर लेंगे, क्योंकि अब नाउ वी आर लकी इनफ टू बी टुगेदर वंस अगेन। Now, schedule is schools are expected to adhere to the timeline specified by the board for the planning, preparation, and viva voce of ASL based projects. Final assessment of the skills is to be done on the basis of parameters suggested by the board. Language teachers, however, have the option to adopt and modify. तो list of projects हम change भी कर सकते हैं, modify भी कर सकते हैं, parameters भी हम modify कर सकते हैं according to our own requirement. Okay. Now, what are the suggestions for project work? The project work can be interdisciplinary in theme. The ideas, issues highlighted in the chapters of poems or drama given the prescribed books can also be developed in the form of a project. Students can also take up any relevant and age appropriate theme जो बच्चों के लिए suitable है, उस theme को after discussing with the teacher they can pick up that topic. Okay. लेकिन normally freedom जब दी जाती है तो बच्चे confuse होते हैं, तो ये always seek help from the teacher कि हाँ भी हमें बताइए कि हम क्या करें, हम कौन सा प्रोजेक्ट पिकअप करें। तो टीचर्स ऑल्सो हैव इशूड अ लिस्ट अकॉर्डिंग टू द instructions of the board, CBSE board. So some suggestions are as follows, which you can use for your projects. Interview based research. Now example दिया हुआ है, students can choose a topic on which to do their research or interview. मतलब ये आपको रिसर्च करनी है या आपको किसी को इंटरव्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट कैन चूज द टॉपिक इवॉल्विंग फूड टेस्ट इन माय नेबरहुड और कोरोना पैंडेमिक एंड द फॉलोआउट ऑन फैमिलीज, रीड द अवेलेबल लिटरेचर। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू लेना है, लोगों से बात करनी है, रिसर्च करनी है इस टॉपिक के ऊपर और उसको आपको प्रेजेंट करना है। मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है, उसका भी एक सेट फॉर्मेट है, सेट नंबर ऑफ पेजेस है जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, नाउ द स्टूडेंट देन कंडक्ट्स इंटरव्यूज विद अ फ्यू नेबर्स ऑन द टॉपिक। जो आपको मैंने बताया कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है इससे रिलेटेड या एनी अदर टॉपिक विच यू हैव सिलेक्टेड फॉर योरसेल्फ, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, आपके उम्र के हिसाब से होना चाहिए, या सजेस्टेड बाय द टीचर और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू लेना है लोगों का with the help of the teacher. Student will frame questions based on the preliminary research or background. The student will then write an essay, write up, report, etc. up to 1000 words on his or her research and submit it. He or she will then take a viva on the research project. The project can be done in individually or in pairs or groups. लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, फाइल आपको अपनी खुद की मेंटेन करनी है। ठीक है,
Now, next is listen to podcasts, interviews, radio or TV documentary on a topic and prepare a report, countering or agreeing with the speakers. Write an 800 to 1000 words report and submit. Take a viva on the report. तो जो आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है प्रोजेक्ट के रूप में उसी पे आपका वाइवा होगा. ठीक है. Now students create their own video or ऑडियो आफ्टर राइटिंग अ स्क्रिप्ट. आपने स्क्रिप्ट लिख दी, अब आप उसका एक वीडियो बनाएंगे कि एक एक पेज के ऊपर आप अपना कैमरा रख के उसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे कि ये मैंने टॉपिक लिया था, दिस इज माय एक्नॉलेजमेंट, दिस इज माय सर्टिफिकेट, दिस इज माय परमिशन, व्हाटएवर जो भी आपने पेजेस, आप पेज पलटते जाएंगे और उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओन वीडियो. ठीक है. वीडियो और ऑडियो ये सारे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं. आफ्टर राइटिंग अ स्क्रिप्ट, बिफोर दे डिसाइड ऑन अ फॉर्मेट, द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. थीम, टॉपिक ऑफ द ऑडियो और वीडियो. Would the child like to pick a current issue or something artistic like theatre? What are the elements that need to be part of the script? Will the audio or video have an interview with one or more guests? आप उसमें इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में. Would they prefer to improvise while chatting with guests or work from a script? ठीक है. What would be the duration? How would they present the script or report to the teacher? For example, can it be in the form of a narrative? तो ये सब चीजें after discussion with the teacher you can finalize whether you have to present it in form of video or in audio or a report or a script, whatever. Okay, सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको किस तरह से प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करना है. नाउ राइट, डायरेक्ट एंड प्रेजेंट अ थिएट्रिकल प्रोडक्शन. नाउ थिएटर आप लोगों ने बहुत देखा होगा, वन एक्ट प्ले, ड्रामास भी आपने बहुत देखे होंगे, सुने होंगे. In your course also there are many dramas, plays हैं आपके. तो this will be a project which will be done as a team. अब ये project एक ऐसा जो आपको टीम में ही करना पड़ेगा because you will have different participants, different characters. It will involve planning, preparation and presentation. ठीक है, पहले plan करेंगे आप, then you will prepare the dialogues and dialect delivery and then presentation before the audience. In short, various language skills will be utilized. बहुत सारे language skills इस काम में आपके use होंगे and you will learn to be a leader also. There will be researching discussions, writing the script, auditioning and ultimately producing the play. The project will end with a presentation and subsequently a viva. Teachers will be able to assess the core language skills of the students and help them grow as 21st century critical thinkers. जो मैंने आपको बताया था कि CBSE is planning to make you ready for the future, which is based on creativity and critical thinking. So 21st century के critical thinkers बनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, and this is the way you can become. So now instructions for the teachers which you need not worry, but you can go through कि आप टीचर से कैसे हेल्प ले सकते हैं. Properly orient students about the project work as present guidelines. Facilitate the students in the selection of theme and topic, which teachers keep giving you the topics कि आप इस topic पे बनाएंगे project. This is our preparation. Then create a rubric for assessment. वो जो हमने आपको शुरू में मैंने आपको बताया था कि rubrics means points at what you will be tested. आपको 1 नंबर क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, 2 क्यों मिलेंगे, 3 क्यों मिलेंगे, 5 कैसे मिल सकते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है, वो मैंने आपको चार्ट पूरा अभी शेयर कर लिया है with the students before they start so that they know the parameters of assessment. एक बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमारी टीचर हमें किस पॉइंट पे, किस पैरामीटर पे हमें टेस्ट कर रही है. तो वो सब आपको मैंने जो पॉइंट शेयर किए हैं that you can go through. Teachers need to familiarize themselves with the method of assessing students with the rubric, a table with different criteria and a grading scale. आप अपना भी rubrics तैयार कर सकते हैं. Teachers can do it. And then the moral of the story is that the same should be conveyed to the children. Sorry. Now choose the criteria on which you will grade students and list them along the left side of the page.
Create an even number of columns along the top of the page. These columns will represent potential skill levels of the students. Assessing students on 4 or 5 criteria is an easy way to begin. For each criterion, define the ability that a student would exhibit at each of the levels. The more detailed you make your criteria, the easier it will be to evaluate each student and define the level at which the student is presenting. So, sample rubric मैंने आपको बता ही दिया शुरू में. Now parameters for overall assessment. Overall assessment आपकी कैसे होगी? वो तो understood है. अगर वाइवा है तो आपका pronunciation भी check होगा. Whether you are able to pronounce the words. So we keep telling you that you have to take care of your pronunciation and unusual spellings and intonations. Now assess the students for the pronunciation skills and determine at which level the student needs improvement. Now vocabulary. ये सारे पैरामीटर्स हैं बेसिक्स जो आपको दे आर पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज. एक्यूरेसी, ग्रामर आपको ध्यान रखना ही रखना है हमेशा. लैंग्वेज स्किल में ग्रामर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. स्पीक एंड आंसर द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वाइवा. लिसन टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स. ओके. एंड जब आप बोलते हो तो हम उस चीज को आपके ध्यान से सुनते हैं कि आप किस तरीके से बोल रहे हो या आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो या नहीं. नाउ कम्युनिकेशन. असेसिंग द कम्युनिकेशन स्किल्स. इंटरेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइवा के वक्त the teachers need to ask the students some questions. Now questions need to be based on the projects that have been suggested or chosen by the student. ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है इसी के बेस पर आपका इंटरेक्शन होगा. वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. It is imperative for a teacher to read the essays or project reports before they can be ready to ask questions. आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपके एग्जामिनर के पास आएगी, एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास. वो उसको पढ़ेंगे और उसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पुट अप होंगे. तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी मेहनत होनी चाहिए, तभी आप उसके जवाब दे पाएंगे. ठीक है. नाउ टीचर्स नीड टू ऑब्जर्व हाउ स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस. अब आपका वाइवा में होगा क्या? आपको एग्जामिनर ऑब्जर्व करेगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप जवाब दे पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको आना चाहिए. Are they able to understand and answer questions independently? Or can they answer only when the questions are translated into simpler words or repeated? Are they able to give appropriate responses? ये भी बहुत important चीज है कि आपको जब simpler words में बोला जाए या repeat किया जाए question, तभी आप जवाब दे पा रहे हैं. ये सब भी आपका टेस्ट होगा. These elements of interaction are necessary for clear and effective communication. A student with effective interaction skills will be able to answer questions with relative ease and follow the flow of conversation. ठीक है. तो dear children, interactions, fluency, grammar, accuracy, all these are very important part of your Viva. 5 marks आपको 95 plus 5 होने से आपके 100 out of 100 बनते हैं. 92 plus 5 आपके 97 out of 100 बनते हैं. So dear children, 5 marks project file के और 5 marks आपके वाइवा के very important for overall scoring. ठीक है. Now fluency may be easiest quality of to judge in the students speech. How comfortable are they as they speak and express themselves? ठीक है. ये main point है. How easily do the words come out? Are there appropriate pauses and gaps in the way a student speaks? Fluency is a judgment of this communication and is important criterion when evaluating speaking skills. Now these criteria are pronunciation, vocabulary, accuracy, interaction, and fluency. As I told you in the beginning, all these points need to be taken care of if you want to have overall speaking abilities. Okay, these are the hallmarks of a student's overall speaking abilities. Teachers must also remember that some students may excel in one area and struggle in another. जरूरी नहीं कि आप एक टॉपिक पे अच्छा बोल गए तो दूसरे पे भी आप अच्छा बोलेंगे. It may be possible that you are able to speak well in one topic, but you are not able to speak on the other. तो इसमें आपको घबराना नहीं है. आपकी जो फ्लुएंसी, एक्यूरेसी सब चेक हो जाती है, वो एक ही अटेम्प्ट में आपकी चेक हो जाती है. ठीक है. Now next is your finally
Teachers must remember that a proper evaluation of the students will take into consideration more than just one oral interview on the final ASL project. Teachers must take note of a student's progress throughout the academic year. Now, what is project portfolio and project report? What you have to do? This is the compilation of the work that the students produce during the process of working on their ALS project. ALS project आपने बना लिया, अब इसको compile कैसे करेंगे? First page will be your cover page with title of the project, school details, details of the students, then statement of purpose, objectives, goals. ये सारे pages आपके अलग-अलग लगेंगे file में. Then certificate of completion under the guidance of the teacher. Action plan for the completion of assigned tasks. Materials such as scripts for the theatre, role play, questionnaires for interview, written assignments, essays, survey reports, and other material evidence of learning progress and academic accomplishment. Now, 800 to 1000 words for script or report. Not very big task, you can do it without any trouble. Now, student and group reflections. This is also one very important part. If possible, photographs that capture the positive learning experiences of the students. List of resources, bibliography. These are very, very important because we have to acknowledge, we have to thank the resources which we have used in preparing our project. The following points must be kept for consideration while assessing the project portfolios. Quality of the note, this is the role of the examiner. The examiner will be there from outside, so they will take care that your quality of the content of the project is okay. Accuracy of information is there. Adherence to the specified timeline. जो timeline set थी उसमें आपने उसको specify किया है, उसको आपने submit भी timely किया है. All these things are important. Then content in respect of spellings, grammar and punctuation. Clarity of thoughts and ideas. Creativity उसमें है या नहीं, contributions by group members है, knowledge and experience gained. Now when we say group work, that I told you that will be in the form of a play or something else what you are presenting. So dear students, this is all about your project which you have to present. Finalization of the topic can be taken into consideration with the help of a teacher. Now here we come to the 5 steps in project plan. Project initiation means when you decide what you are going to do, then you plan accordingly for project. Then execution is there, implementation is there, and closure of the project. As I told you, closure is compilation of your whole effort, whatever you have done. Now, month is planning and research for the project work. Objectives are teachers plan a day to orient students about the ALS projects. Details are shared with all stakeholders. Students choose a project, select team members and develop project plan. Group meets preferably online and reports to the team leader about the progress. Shortfalls and successes are detailed. Team leader apprises teacher mentor, and then students working individually or in pairs also update the teachers. A logical, deliverable and practical plan is drafted by the team, pair or individual. Goals or objectives are clearly defined for all. Work is delegated to team members by the team leader. Students wishing to work alone develop their own plan of action. Detailed project schedules are shared with the teacher. What I suggest is don't indulge in group work because already in other practicals you're doing it. Try to make your own project file so that you develop your own competencies in a better way. Suggestions and improvements are shared by the teacher wherever necessary. Group members coordinate and keep communication channels open for interaction. Now, gaps, if any, are filled with the right skill tests by the team leader. Individual students are there. The final draft of the project or portfolio report is prepared and submitted for evaluation. Okay. Then Jan and Feb, students are assessed on their group, paired, individual presentations on allotted days. Final Viva is conducted by the external examiner. यहाँ पे इंटरनल भी लिखा हुआ है लेकिन आपको इंटरनल शायद ही होगा, एक्सटर्नल ही आएंगे because CBSE has proposed, CBSE has already declared that we'll be sending the list of examiners and those examiners will come and test you
for Viva. Then in Feb and March, as per the timelines given by the board, वो जो time आप आगे बढ़ चुका है आपका, अप्रैल में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो things are going to materialize in most probably in March. Marks are uploaded on the cbse website, and this is a sample rubric for ALS project. This is useful for the teachers. Time limit में presentation is less than or more than 5 minutes long, तो 1 mark है. Other rubrics are also given for, these are for teachers. They can plan their own rubrics. Okay, just a example for different types of rubrics. Okay, so this is all for today, and I hope the whole video must have given you a lot of exposure on how to prepare a project. You can go through the detailed information. Everywhere I have highlighted the main things. Especially this area is very, very important for you. Project report, which you have to submit for your Viva. Okay. So thank you very much, dear children. Have a nice day. All the best to you for your project files and project work, and get going for your fruitful performance in Viva. Thank you very much.